We are recording. Thank you everybody for joining us today for this hopefully informative webinar on the coronavirus vaccine. What we aim to do is talk about this in both English and in Urdu. So if I introduce myself, my name is Dr. Zirva Khan. I'm a GP in the North Staffordshire and Stoke on Trent area. Dr. Fizah Shaheen, would you like to introduce yourself? Yes, hello. I'm Fizah Shaheen and I'm a GP in Stoke and North Staffordshire. Passing over to Dr. Salma Awais. Yeah. Hi, I'm Dr. Salma Awais. I'm a GP trainee in Staffordshire. Thank you. I'm Dr. Misbah Jadoon. I'm a GP in Stoke-on-Trent and North Staffordshire area. So I think the best way to start off this conversation really is I'm going to ask the question to Dr. Fizah and Dr. Misbah. I mean, why is it that this vaccine is so important in our communities? Okay, I'll start then if that's okay. So we know that COVID-19 is now, has been a pandemic for the past year, and in this country alone, we've had over 100,000 deaths. It's very serious. Studies have shown that people in the Asian community and Black communities have been affected higher than the white British population, and there's higher risk of infection and also death. Thankfully, a vaccine has been produced. Several vaccines have been produced, both the Pfizer vaccine and the Oxford AstraZeneca vaccine. Over, I think now 20 million people in the UK have now been vaccinated, which is fantastic. But in our communities, again, it appears there's 30% less people being vaccinated. And this is a serious problem because it might mean we have outbreaks, further outbreaks in these communities once the majority of the UK has been vaccinated. So it's really important that we get vaccinated. Passing over to Dr. Misbah. यूके में इस वक्त कोविड की वजह से 1 लाख अमवात हो चुकी है। हमने ये स्टडीज में देखा है कि एशियन जो कम्युनिटी है, बंगाली, पाकिस्तानी और इसके साथ साथ ब्लैक कम्युनिटी में भी इस वबा की वजह से अमवात की शरह मुकामी अंग्रेजों की निस्बत ज़्यादा है। अब हमें कोविड के हिफाजती टीकों की सूरत में उम्मीद की किरण नजर आई है और हम ये चाहते हैं कि हम आज इसके बारे में बात करें। यूके में इस वक्त 20 मिलियन से ज़्यादा लोगों को ये हिफाजती टीके लगवाए जा चुके हैं। मगर परेशान कुन बात ये है कि हमारी कम्युनिटी में यानी कि पाकिस्तानियों में और बंगालियों में इन हिफाजती टीकों को लगवाने की शरह मुकामी अंग्रेज़ों की निस्बत 30% कम है। आज हम इसी बारे में आपको और मालूमात फराहम करना चाहते हैं ताकि आप अपने लिए और अपने खानदान के लिए एक बेहतर फैसला कर सकें। Thank you both, Dr. Shaheen and Dr. Misbah. So how about we start with Dr. Salma then? Why did you, tell me about your experience with the coronavirus vaccine. मैं यहाँ से शुरू करूँगी। नवंबर के एंड में मुझे खुद कोरोना हो गया। कुछ मुझे ये हुआ कि जिस्म में दर्द थी, साथ बहुत बुखार था। जब टेस्ट करवाया तो उससे पता चला कि कोरोना हो गया। मुझे इतना बुरा नहीं हुआ, लेकिन यह है कि 3-4 दिन काफ़ी अलामात रहीं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो कम होना शुरू हो गया। हमें फिर दिसंबर के आखिर में कोरोना की वैक्सीन की ऑफ़र हुई, जो कि एक बहुत खुशकिस्मती थी आज के ज़माने में। मैंने वैक्सीन इसलिए लगवाई क्योंकि मैं ये चाहती थी कि मैं खुद भी महफूज रहूं दोबारा कोरोना होने से, और ये कि मेरी वजह से किसी और को इसका कोई और शिकार ना हो कोरोना वायरस का, क्योंकि हम डॉक्टर हैं, हम मरीजों को देखते हैं, और अगर ये बहुत बुरा हो कि अगर डॉक्टर की वजह से किसी दूसरे मरीज को वायरस चला जाए, तो मैंने बेसिकली
इसलिए अपने आप को वैक्सीन लगवाई ताकि हम खुद भी महफूज रहें और हमारी वजह से और लोग भी महफूज रहें। जो जहाँ तक फिर बात आती है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स की, बाजू में बस हल्का दर्द हुआ, 2-3 दिन रहा और हल्का सा जिस तरह ज़ुकाम या फ्लू के होते हैं असरात वो हुआ, उसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। Thank you. और वो भी जो बाजू की दर्द है वो भी 48 घंटे में काफ़ी बेहतर हो गई थी। Sorry I interrupted you, but thank you very much for sharing your experience. Dr. Fizah, would you like to share your experience? Yes, okay. So I had the vaccine because I'd heard how serious the coronavirus infection was. Personally, there were also some people in the community that I had heard of who had contracted coronavirus, and they were really unwell. A couple of them had ITU admissions. Sadly, in the wider family, there was a death. So I knew that this was very serious. So I had the AstraZeneca vaccine. And in terms of side effects, I had a bit of an achy arm and a bit of temperature symptoms for a couple of days, and after that things were fine. I also encouraged my mum, who became eligible to have the vaccine. She had the Pfizer vaccine and actually had no side effects and was fine. Thank you for that. Oh, sorry, I'm interrupting you. That's fine. That's fine. So Dr. Misbah, how about your experience? मैंने फाइजर की वैक्सीन मुझे ऑफर हुई और लकीली खुशकिस्मती से मैं शुरू में जब ये वैक्सीन आई तो चूंकि हम डॉक्टरों को पहले लगाई गई तो इसलिए मुझे दिसंबर के आखिर में ही ये हिफाजती टीका लगाने का मौका मिला और इसकी वजह से मैं अब तक की दोनों डोजेस मुझे लग चुकी हैं। हिफाजती टीकों को लगवाने की वजह ये थी कि एक तो ज़ाहिर है जिस तरह डॉक्टर सलमा ने ज़िक्र किया कि हम डॉक्टर हैं तो हम ज़्यादा ख़तरे में हैं क्योंकि सारे हम मरीज़ देखते हैं, हमें उनसे लग सकता है और हम आगे और मरीज़ों को ये वायरस लगा सकते हैं। दूसरी वजह ये थी कि ज़ाहिर है कि हमने एज़ अ डॉक्टर हमें ये बात पता थी कि ये जो बीमारी है ये कितनी ये जानलेवा भी हो सकती है, कितनी ख़तरनाक हो सकती है। एक और वजह ये भी थी कि ज़ाहिर है मेरी माँ-बाप जो हैं वो दोनों जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से ये वायरस उन तक पहुँचे क्योंकि वो ज़्यादा इस वायरस से खतरे में हैं। मेरे ख़ानदान में और लोगों को ये वायरस से इन्फेक्शन हो चुका था और उनमें से एक बहुत ज़्यादा बीमार भी हुआ जिसकी वजह से काफ़ी हमें परेशानी हुई और मैं नहीं चाहती थी कि हम इस परेशानी से दोबारा गुजरें। और ज़ाहिर है मैं आपको भी यही मशवरा दूँगी कि आप ज़रूर अपने आप को और अपने ख़ानदान को इस बीमारी से महफूज रखने के लिए इन हिफाज़ती टीकों के बारे में सोचें। Thank you very much, Dr. Misbah, as well. So my own experience is fairly similar as well. So I had the Pfizer vaccine around the beginning of January. I actually took my time a little bit before I made that decision, and I think it was because just like everybody else had some slight hesitations about it. You know, it's come out very quickly. There were some rumors circulating. There were people that were, you know, trying to tell you things to make you doubt how good the vaccine actually was. But what I did, which I think is really important, is did my reading from reliable sources, just to make sure that I actually had the facts and I wasn't kind of learning misinformation. And after that, we also had some people in the family become really unwell. We also had a death in the family. So unfortunately, you know, we didn't want, I didn't want to take that risk and you know, I live with my in-laws. I didn't want to expose them to it. So it felt like the right thing to do. Alhamdulillah, I was also fine when I had the vaccine. My arm was a bit sore, but then within sort of a couple of days that had settled down, and alhamdulillah, I've been fine since then. So, okay, let's move on to the next section. So,
Right now, Dr. Fizah and Dr. Misbah, what do the guidelines say about who is eligible for the vaccine? Okay, so there's a joint committee of vaccines and immunisations which have set out the order and priority groups of people to be vaccinated based on their health conditions and risk of getting a serious infection or complications. The groupings are from 1 to 10, starting with the elderly over 80s in care homes and coming down in age-wise categories, and also determined by health problems. People at most at risk are people who have conditions such as diabetes, COPD, severe COPD or asthma, kidney disease, and if people are on immunosuppressant medications or chemotherapy. So they will have received either a letter from the NHS or contact via their GP. Currently, the NHS is booking people in group 6. Okay, Dr. Misbah. हुकूमत ने इन हिफाजती टीकों को लगवाने के लिए लोगों को मुख्तलिफ ग्रुपों में तकसीम किया है और ये जो ग्रुपिंग है ये 1 से 10 तक जाती है। पहले सबसे अगर हम ग्रुप 1 की बात करें तो उसमें वो लोग शामिल थे जो कि 80 साल से ज़्यादा उम्र के थे और केयर होम्स में रहते थे और उनके केयरर्स। इस वक्त जो है हुकूमत ने जो है वो ये हिफाजती टीके 18 से 65 साल के उन लोगों को लगा रही है जिनको कोई और बीमारी लाहक है, मसलन दमे की बीमारी, COPD, डायबिटीज या फिर गुर्दों की बीमारी, और या फिर उन्हें कोई ऐसी दवाएं मिलती हैं जिसकी वजह से उनको उनकी कुव्वत मुदाफ़िक कमज़ोर हुई हो, मसलन कीमोथेरेपी वगैरह। ये ग्रुपिंग जो है ये इस बेसिस पे की गई है कि कौन कितना ज़्यादा कोविड की वबा से खतरे में है। फिक्र की बात ये है कि हमारी कम्युनिटी, इनके पाकिस्तानी और बंगाली कम्युनिटी के बहुत सारे बुजुर्ग वो हैं जो है उनको ये वैक्सीन दी ऑफर की गई मगर उन्होंने अभी तक नहीं लगवाई है, और इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस बारे में सोचें और अपने लिए बेहतर फैसला करें। So I found the table. Can everybody else see it? Yeah. Yes. So just like Dr. Fizah and Dr. Misbah explained, this is the order. So, you know, we're right the way down to group 6 now, at least in most areas. So that's the majority of the population that have some kind of a health problem. So anyone from that, you know, prior to group 6 upwards is eligible. So, you know, if it is that you have missed your invite, but you're now reconsidering it, then please do contact your GP or you know, just to get some advice about that. So I will stop screen sharing. Okay, so I think what I want to do now is I think it's good that we talk about the misconceptions, the main misconceptions that there are, because this is one of the biggest problems in our communities, is that there is a lot of misinformation and people seem to be very much buying into those misinformation that they've been given. So Dr. Fizah and Dr. Misbah, you know, are these vaccines halal? So the Muslim Council of Britain and the British Board of Scholars and Imams have looked at the contents of both the vaccines. They have certified that they are permissible according to Islam. There is no pork or gelatin or animal products in the vaccine, and there are also no human cells in the vaccine. There have been some concerns raised in some quarters about alcohol in the AstraZeneca vaccine. Again, these have been looked at, and the recommendation is that this is permissible because it contains less than the amount of naturally occurring alcohol which we find in foods such as bananas, apple juice, grape juice, etc. But I recommend, if this is concerning you,
you contact your own imam or scholars to get their opinion, but the consensus is that they are halal. यूके में इस वक्त 2 तरह के हिफाजती टीके लगाए जा रहे हैं, फाइजर के और एस्ट्राजेनेका के, और ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने इन दोनों हिफाजती टीकों को हलाल करार दिया है। इन हिफाजती टीकों में कोई भी जानवर के अज्जा या सूअर के अज्जा शामिल नहीं किए गए। कुछ लोगों को ये खदशात थे कि एस्ट्राजेनेका की हिफाजती टीकों में अल्कोहल शामिल की गई है, मगर ये ब्रिटिश इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने की वेबसाइट पे भी साफ-साफ लिखा है, आप जाके रुजू कर सकते हैं कि ये इतनी कम मिकदार में है कि इसकी वजह से हिफाजती टीकों को आप हराम करार नहीं दे सकते। इतने मिकदार में अल्कोहल जो है आम खाने पीने की अशिया मसलन सेब के जूस या केलों में भी शामिल होता है। इसके अलावा अगर आपको इस बारे में और खदशात हैं तो आप जिन उलमाए कराम पर एतमाद रखते हैं आप उनसे भी रुजू कर सकते हैं। शुक्रिया। Okay, Dr. Zirva and Dr. Salma, can we come to you to ask you about whether, concerns about this vaccine being developed too quickly and its safety? So that's a really good question, because, normally it takes 10, 15 years before a vaccine goes from being developed to being circulated because of all the studies and trials. In the instance of coronavirus, the difference that we've had is, coronavirus has devastated the world. It's not just affected one country, it's affected the whole world. It has affected everybody. So because of this, there's been a worldwide push. There's been unlimited money going into this. There's been no barriers for this to be produced, tested, and out as soon as possible, just because of the impact that coronavirus has had on the world. So they've not made any shortcuts. It's been developed in just as strict measures as it normally would have done. But because of these barriers and issues with funding and approval and things, that's the reason why it's been able to have been rolled out as quickly as it has. अब एक सवाल ये था कि ये वैक्सीन इतनी जल्दी कैसे बन गई, हालांकि बाकी वैक्सीन्स को बनने में और उस पर जो तजर्बे होते हैं वो करने में बहुत साल चाहिए होते हैं। इसमें कोई शॉर्टकट इस्तेमाल नहीं किया गया। वजह ये थी क्योंकि कोविड इस बीमारी ने सारी दुनिया को अपनी जद में ले लिया था। कोई भी ऐसा मुल्क नहीं था जो इससे बचा हो। तो जितने बड़े मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उन सब ने अपनी रिसर्चेस को बहुत ज़्यादा पैसे दिए ताकि इस बीमारी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए जल्द अज़ जल्द कोई हिफाजती टीका बनाया जा सके। बहुत सारी कंपनियां, बहुत से साइंसदान, उन्होंने दिन रात मेहनत की इस वैक्सीन को बनाने में, और सिर्फ वैक्सीन बनाई नहीं, उन्होंने इस पर जो इब्तदाई तजर्बे हैं वो भी इन्होंने इंसानों पर भी किए। इंसानों को वैक्सीन लगी और उन्होंने उन पे मुशाहिदा किया कि उन पे क्या असरात आए हैं। उसके बाद ये वैक्सीन बाकी लोगों को लगाने के लिए मार्केट में दस्तयाब हुई है। और वजह ये नहीं है कि उन्होंने कोई इसमें शॉर्टकट्स लिए हैं, वजह सिर्फ ये है कि सारी दुनिया ने अपना पैसा, अपनी मेहनत, अपनी टेक्नोलॉजी, हर चीज़ इस्तेमाल की है, और सिर्फ इसलिए ये वैक्सीन बहुत जल्दी आ गई है। Thank you very much, Dr. Salma. So I'm going to come back to Dr. Fizah and Dr. Misbah again. So one of the other misconceptions regarding the coronavirus vaccines is that they can affect your ability to get pregnant. Now, this is a big issue amongst our women. So I think it's really important to address this. So, what would you say to that, Dr. Fizah? Thank you. Yes, a very important question. I can assure you that the coronavirus vaccine does not affect your fertility at all. The vaccine just doesn't work in that way. Much like other vaccines, they just don't affect your fertility. The actual virus, the actual vaccine is delivered directly into your muscle cells, and so it doesn't actually have anything to do with your fertility.
I did hear subsequently people in trials for the coronavirus trials actually unknowingly later became pregnant. So there is some proof that people were able to conceive naturally even after being in the vaccine trials. डॉक्टर ज़िरवा का सवाल ये था कि क्या कुछ लोगों को खदशात हैं कि ये हिफाजती टीके जो हैं ये बांझपन कर सकते हैं, और ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि काफ़ी लोग इस बारे में परेशान हैं और इस वजह से ये टीके लगवाने से घबरा रहे हैं। मैं आपकी ये गलतफहमी दूर करना चाहूँगी कि ये हिफाजती टीके बांझपन नहीं पैदा करते, और ये बात गलत है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। कुछ ट्रायल्स में ये देखा गया कि कुछ लोग जिन्होंने इन हिफाजती टीकों के ट्रायल्स में हिस्सा लिया वो आगे जाके नेचुरली कुदरती तौर पर प्रेग्नेंट हो गए, इनके हामला हो गई वो ख़वातीन। इसलिए ये बात इन वाक़यात से भी ये बात गलत साबित होती है कि ये जो है आपकी फर्टिलिटी पे इफेक्ट करता है या आप बांझपन पैदा कर सकते हैं। Thank you. So Dr. Zirva and Dr. Salma, just to ask you a question, can you tell us about the long-term effects of the vaccine and of coronavirus? That's a good question. And again, really important when a vaccine has come out so quickly. You know, it's understandable that people do worry about what the long-term effects are. Now, the vaccine hasn't been around long enough for us to study the long-term effects of the vaccine specifically. But what we do know about coronavirus is majority of people have a mild illness. Some people have more of a severe illness, and a big proportion of people die. So we know that for sure about coronavirus. Now, what we also know with time, what we're learning is people are developing something called long COVID. So long COVID is something that people who've had even a mild illness with coronavirus seem to develop, you know, some months down the line. And it's something that we don't know how long they'll have it for. But, you know, I've got patients and they will tell me this is worse than me actually having the infection. So what we do know is that the coronavirus vaccine substantially reduces your risk of getting the COVID infection. So that would mean even less people would be getting a problem like long COVID. So when you think about it on balance, yes, okay, we don't know the long-term side effects of the coronavirus vaccine, but a lot of the scientists have reassured us through their trials and also with the information they have about the way the vaccine works, that there's no reason why there should be any strange long-term side effects. And when you put that against what we do know about coronavirus, it seems like a bit of a no-brainer really to have the vaccine to protect us against the coronavirus infection. सवाल ये है कि इस वैक्सीन के देर पास रात क्या हैं। तो अगर हम ये देखें कि जब जिन मरीज़ों को कोरोना वायरस की बीमारी हुई, उनमें से कुछ लोगों को तो हल्के असरात हुए, हल्के से वो हुए अलामात हुई, कुछ दिनों में वो ठीक हो गए। कुछ लोगों को वो बहुत देर तक भी उनके जो अलामात हैं वो रहीं, और अस्पताल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी जो उन्होंने रिसर्च की उसमें ये देखा गया कि जो कई मरीज़ जो हैं वो बहुत देर तक उनको इसके प्रॉब्लम्स रहते हैं, और स्पेशली कुछ मरीज़ जिनको और बीमारियां होती हैं वो और ज़्यादा लंबी उनकी कोरोना वायरस की वजह से बीमारी हो जाती है। सवाल ये है कि वैक्सीन की वजह से जो देर पास रात हैं, क्योंकि वो अभी तजर्बा हुआ नहीं, क्योंकि वैक्सीन अभी आई है। अभी साइंसदान इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि जिनको वैक्सीन का टीका लग गया है, अब उन पर क्या असरात होंगे। अगर हम देखें कि जैसे तराजू में वज़न करते हैं, फ़ायदा यह है कि नुकसान है, तो देखा जाए तो वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि उससे उम्मीद की जाती है कि ज़्यादा लंबे असरात उसके कोई हमें होने नहीं चाहिए, क्योंकि जितनी ट्रायल्स और जितना तजर्बा हो गया उसके मुताबिक ऐसी कोई चीज़ मिली नहीं है कि जिसकी वजह से कोई ज़्यादा देर पास असरात उसके सामने आए। तो उम्मीद यही है कि कोई ऐसे असरात नहीं होंगे। थैंक यू। Thank you very much. So I'm going to move on to the common questions that we got asked
when we did our previous webinar, because I think these are also very common misconceptions amongst our communities. So this question I'm going to ask Dr. Fizah and Dr. Misbah. Is coronavirus, has that come around because of 5G? Okay, so yes, this was a rumor that was going around very early on with the coronavirus. And I think it's important to say, no, there's no evidence that 5G spreads or causes the coronavirus. Coronavirus is actually a viral infection, so it cannot be transmitted via 5G. I think this actually began because at the time of the initial outbreak in Wuhan in China, when the vaccine broke out initially, there were 5G masts being installed in that area at that time. Since then, obviously, this has now become a pandemic, and we can see that in countries that don't have any 5G masts or signal, they are still being affected by coronavirus. So definitely there is no link between 5G and the coronavirus infection. शुरू में जब ये वायरस चाइना में फैला वुहान में, तो उस वक्त चूंकि 5G किया था उस इलाके में, इसलिए ये अफवाह फैली कि शायद ये वायरस जो है इसका कोई ताल्लुक 5G से है, लेकिन ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। और कुछ काफ़ी ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे ये इलाके हैं जहाँ पे 5G नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी ये वायरस जो है ये बीमारी कर रहा है और अमवात हो रही है इस वायरस की वजह से। तो ये अफवाह जो है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। Okay. So Dr. Zirva and Dr. Salma, coming back to you, another question that we wanted answered that was submitted was, do we need to get the vaccine if somebody has already had coronavirus? Thank you, Dr. Fizah. That's a very good question as well. So usually when anybody gets an infection, their body builds an immune response against it. So it remembers what the infection looks like. So if it was to be attacked by that infection again, it would have the weapons to fight it, so to speak. The problem we know about coronavirus is not everybody develops that memory against the infection. And even if they do, we still don't know how long that lasts for. So regardless of, we don't have a reliable way of checking whether you do have a memory response to it. So the safest thing to do is give the vaccine, because even in the trials, the vaccine trials have shown if you have previously had coronavirus, you have a boosted memory response. And I think, the maximum we can do to try and have as much memory in people's bodies of the infection, the better. सवाल ये है कि जिन लोगों को पहले कोरोना वायरस हो चुका है उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। तो देखा ये गया कि जब कोरोना वायरस की बीमारी होती है तो जिस्म में मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है वो अपना असर काम शुरू करता है और वो जिस्म में एक स्पेशल चीज़ बना देता है जिसे एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो बेसिकली एंटीबॉडीज़ फिर वायरस के ख़िलाफ़ काम करती हैं। अब मसला ये है कि जब कोरोना वायरस की बीमारी होती है उसके बाद भी ये एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादा देर तक ज़िंदा नहीं रहती, वो बॉडी से ख़त्म हो जाती हैं। और उसके बाद जब हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन देते हैं हम, तो उसके बाद जो मुदाफ़ियाती निज़ाम काम करता है और एंटीबॉडीज़ बनती हैं, वो बहुत देर तक जिस्म में रहती हैं। तो बेसिकली इसीलिए ज़रूरी है कि वैक्सीन लगवाई जाए ताकि ज़्यादा देर तक उसका असर रहे। Thank you, Dr. Salma. So Dr. Fizah and Dr. Misbah, another question that we got asked was, only the sick and elderly people die from coronavirus. Could you please clarify this? Yeah, again, just something that's important to cover. We have seen the coronavirus affecting those very elderly patients and with health problems, but also on the other side of things, we've seen very young, fit, healthy people with no problems
have quite bad infections with coronavirus. Some had mild. So again, I think we just need to be careful when we hear these things. Coronavirus can affect anybody who is fit or healthy, but some people are at higher risk than others. ज़िरवा, आपने बिल्कुल सही कहा कि कुछ लोगों को ये गलत फहमी है कि कोरोना वायरस जो है सिर्फ बूढ़े लोगों को या बीमार लोगों को ही खतरे में डालता है और उन्हीं लोगों में अमवात होती हैं इसकी वजह से, मगर ये बात सही नहीं है। देखा गया है कि जवान और तंदुरुस्त लोग भी इस वायरस से काफ़ी बीमार हो सकते हैं और इस वायरस की वजह से जवान और तंदुरुस्त लोगों में भी अमवात हुई हैं। ये सोचना कि सिर्फ इस बात पे कि हम जवान हैं और तंदुरुस्त हैं तो हमें ये कुछ इससे खतरा नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत होगी। और हमें इस वायरस से बचने के लिए जहाँ पे हिफाज़ती टीके लगवाने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, वहाँ पे बाकी तदाबीर जो हैं मसलन हाथ धोना, एक दूसरे से फासला रखना, इन पे अमल करना चाहिए। Thank you very much. I think Dr. Fizah is supposed to be asking me a question next. Yeah, finally, I think there's a question. So what would you tell somebody who is young and low risk and thinks that they don't need the vaccine? So just like we've discussed, Dr. Fizah and Dr. Misbah mentioned, coronavirus will affect anybody. It doesn't, yes, we know some people are at higher risk, so people with health problems, people who are a bit older, but I certainly have heard of lots of people, unfortunately, quite young, healthy, no other medical problems, that have unfortunately passed away from coronavirus, so it can affect everybody. I think if you are eligible for the vaccine, regardless of your age, you should strongly consider having it done. Don't believe that because of your age, the vaccine, it's not necessary for you because you're more likely to fight it off. सवाल ये है कि जो यंग लोग हैं, जो जवान हैं, उनको ख़तरा नहीं है तो उनको वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं। ये बात समझ में आती है कि ज़ाहिर है जो ज़्यादा बूढ़े हैं या जिनको और बीमारियां हैं वो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, लेकिन ये है कि ये इसका बिल्कुल ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि जो जवान हैं और जिनको कोई और बीमारी नहीं है, शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल की या कोई और मसला नहीं है, उनको कोरोना वायरस नहीं हो सकता। हमने स्टडीज़ में देखा और अस्पतालों में देखा गया कि बहुत सारे इवन अमवात हुई हैं जो कि यंग लोग थे जिनको कोई मसला नहीं था। तो इसलिए प्लीज़ आप ध्यान में रखें, अगर आप जवान हैं और आपको कोई बीमारी नहीं है और उसके बावजूद अगर आपको वैक्सीन की वो लोग ऑफ़र देते हैं तो उसको प्लीज़ आप सोचें इंजेक्शन लगवाने के बारे में। Thank you very much. I'm going to hand it over now to Dr. Misbah and Dr. Salma just to summarize. I would strongly recommend that if you're approached and offered this vaccine, then you should seriously consider it. This is what I have advised my own parents, my family, and my friends. If you have any misconceptions about it, then there are lots of places you can sort of look and get the information that you need. And if you have any further questions, we'll be happy to answer those. जैसा कि आज हमारी जो बात हुई उससे मैंने खुद भी वैक्सीन लगवाई, अपने जानने वाले जिनको ऑफर हुई उन सब ने लगवाई है। ये बहुत सेफ है, तो प्लीज़ अगर आप तक कोई कहता है लगवाने का तो सोचें समझें इसके बारे में और एक अच्छा फैसला करें अपने बारे में और अपने बाकी घर वालों के बारे में। और जो हमारी इस बात को सुन रहे हैं वो प्लीज़ आगे अपने जानने वाले अगर कोई वैक्सीन नहीं लगवाना चाहता तो प्लीज़ उन तक भी बात पहुँचाएँ। शुक्रिया। Thank you very much, everybody, for your time. I am going to close the meeting, but if you have any questions at all, then we would always recommend that you speak to your GP or can approach any of us. Thank you very much. Thank you. I'm going to stop the recording now because it's going to stop on me. Stop.